यही रीज़न है कि ईरान में ना ज़्यादातर जो होते हैं ना मैरिजेस बड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाती हैं, क्योंकि लड़की वाला जो होता है ना यहाँ पे डोमिनेंट है कि लड़की को जो है आप इतना हिस्सा प्रॉपर्टी का दोगे और इतने महीने जो है उसे पैसे दोगे, और जब बच्चों की परवरिश जो है उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। साथ ही साथ अगर लड़की को आपने कभी भी कुछ परेशान किया तो लड़की कभी भी आपसे इतनी ज़्यादा जो है अमाउंट मांग लेगी। Most of the families, they have like this, even all the celebrations, there is definitely both music and dancing. In that wedding celebration, as most of you know, Iran is a country that like in which the bride must wear a white dress. Yeah. Okay, not red dress. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ हैं हिंदुस्तान की सबसे चहेती बहू रानी फैज़ा। Namaste family, and welcome to our new video. And so I hope that all of you feel great and you're all fine. So, okay. तो दोस्तों सबसे पहले कहना चाहूँगा गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, ऐसी मेरी और फायजा की दोनों की कामना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं कि यार इंटरनेशनल मैरिजेस कैसे होती हैं, मतलब एक डिफरेंट कल्चर्स कैसे एक हो जाते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या है, हम इंडियंस जो है वो जानना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं कि यार दूसरी कंट्री में और ख़ास तौर से ईरान में और ईरानियन लोग जो हैं वो किस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं, कैसे क्या लड़की वाला देखने आता है, लड़के वाला देखने आता है, उसके बाद क्या होता है, शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, कोर्ट पढ़ाई होती है, क्या 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 होता है। तो ये सब हमें जानना है। तो दोस्तों हम इसी बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को जो ईरानियंस हैं वो करते हैं, क्या होता है ऐसा ईरानियंस की यहाँ शादियों में, और किस तरीके से जो है डे बाय डे रीत और रिवाज जो होती है वो करी जाती है। तो दोस्तों जो रस्म रिवाज होती हैं वो कैसे होती हैं पर्शियन, उसमें मतलब इरानियंस उसको कैसे जो है करते हैं, तो वो सब मैं आज जानने वाला हूँ फायजा से, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अभी उन्हीं चीज़ों से निकलने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं उन चीज़ों से निकलूँ मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ फायजा के थ्रू। सो Faiza, I just say that we are going to discuss about the process of a marriage in Iran, with like a kind of a culture of Iranians, that how they process a marriage, a whole marriage system, like from the day one, from the suitor came, or the girl's family go to suitor's house, boy house, groom house, or what is the thing. Like I know something which is few, there are few, like always even people want to know from you that what is the whole process. So just explain that. Okay, of course. The first thing that I have to say is that just like other countries, just like other countries, like based on the cultures that we have in Iran, this thing, like the marriage process, can be different, like from culture to other cultures. Okay, so because as you know, we have Kurdish people, Irish people, Turk people, Fars people, Arab people. So the culture like are different. So naturally, this thing can be different based on the culture. And but at first, let me start with an interesting fact, and that interesting fact is that, do you know that contrary to India, in Iran it is like this, that the girl family don't search for the suitors or search for the good man. They just wait. They wait, and it is the duty of the son, like the man family, to search for a good girl, and finally they have to like show this kind of thing. Okay, for example, we saw your girl, we like her,
they must start it. सो दोस्तों फायजा का जो कहना है वो ये कहना है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि लड़की वाले भी ढूंढते हैं लड़का और लड़के वाले भी ढूंढते हैं लड़की को, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं होता। ईरान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ईरानियंस बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो जो लड़की वाले होते हैं वो कभी नहीं जाते लड़के वालों के यहाँ। हमेशा जो लड़के की फैमिली है वो ही जो है लड़की की Yeah, तलाश में रहती currently it है। is like this. तो इसी तरह ये पहली चीज़ है जो शायद आपको नहीं पता हो। तो यही रीज़न है कि ईरान में ना ज़्यादातर जो होते हैं ना मैरिजेस बड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाती हैं, क्योंकि लड़की वाला जो होता है ना यहाँ पे डोमिनेंट है। इज द ब्राइड फैमिली इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन ग्रूम फैमिली, या राइट? It seems like this, yeah, because they think that okay, so like they see like this. Okay, even we have arranged marriage. I told you based on the cultures, but commonly like it happens in Iran. It is like I think that 96% of people believe in. So they think that okay, we wanna give them a daughter. So they have to be very much grateful for that. They think like this, you know. तो दोस्तों फायजा का कहना ये है कि ईरानियंस जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम अपनी लड़की दे रहे हैं ना, तो तुमको एहसानमंद होना चाहिए हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसे इंडिया में है ना कि लड़के वाला चोड़ में रहता है बड़ा ही कि हम तो लड़के वाले हैं, हम क्यों झुकेंगे। ईरान में बिल्कुल भाई उसका विपरीत है। जो लड़की वाला होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। वो ये चाहता है कि लड़के वाला ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है झुक के रहे सामने। झुकना पड़ेगा सामने लड़की वाले के, समझे? तो झुक के रहे और रेस्पेक्ट करे, तभी वो अपनी लड़की देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो ईरानियंस में ना, मैंने भी सुना था वहाँ पे, इवन व्हेन आई वाज इन आमादे आई हर्ड दैट। जब मैं आमादे हॉस्टल में था तो जो वहाँ पे रहते थे ना गेस्ट, वो भी मुझसे बता रहे थे कि ईरानियंस जो हैं इस मामले में बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही सख्त हैं, कि वो आसानी से ना अपनी लड़कियाँ जो हैं उसे देते नहीं हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं लड़के वाले को। Okay, so they just they test very much, like they Yeah. try to know in very difficult phases of a groom families. Yeah. Of course. It's like that. Okay, so It is based on that yeah. side. So after Iranian family choose any groom, then after that what happened? Like what is the process after that? Okay, the process that commonly happen in Iran, in Iranian culture is like this: that they have to have some sessions to talk. Oh, okay. To talk to a groom family. Oh. Like some sessions must be held, and finally, like at least two other sessions. Okay, if like when the first session, let me put it in this way, that the first session get held at the time that they say, like the bird family saying that okay, so that guy, let us just see him, let us just talk to him. So the first session is gonna be held at that time. So after the first session, when they talk to the groom family, when the bride talk to a groom in a room, because they I don't know if you know this thing or not, but the groom and the bride must have talked to each other in a separate room. So for some minutes, like at most 30 minutes. And so after this thing, after the time that the bride say to her family that okay, I like that guy, and after the bride family just think that okay, so the groom family seems to be very much good, the boy family is good, so they are going to hold the second session. So it is more serious. Like as the sessions go forward, it just become more and more serious. So at the second session, they talk about something like, okay, so if you we just like each other, we just in Persian we say pasandidan. We just even you have it. So we just accepted each other. So now let's talk about maybe this thing, that thing. Let's talk about your financial. It gets more serious, and finally we have the very much. We can say very much
more and more important session, and that is it based on the family. It can make even it can take time, but normally I am saying it. Yeah, normally and commonly I am saying it, and mostly the third session is gonna be very much serious, and okay, so in that. Even maybe the bride family just invited some of their own relatives to their home, and they're just put each other put in front of each other some what do we call it, some bonds. Oh. And yeah, some bonds. They say that okay, so we, for example, we give our daughter to you based on these conditions. They write them down. They give it to them a grown family, and they have to think over it, sleep on it, and okay, and after that like some other ceremonies will happen. Okay, so I explained this part. Actually this is basically it's also happens with me, right? I also go through some such session. तो दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे ये मेरे साथ भी हुआ था कि जैसे लड़की वाले ने लड़के को अब कर लिया पसंद, तो अब होगा भाई उसका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के होते हैं 3 राउंड, 3 सेशन होते हैं, मतलब उसके भी होते हैं, उसकी पूरी फैमिली के इंटरव्यूज होते हैं। आप समझ लो कितना ज़्यादा, मतलब ये तो यूपीएससी का एग्जाम है पूरा ईरान में। तो इसमें पहले राउंड में क्या होता है, पहले राउंड में कुछ डिस्कशन होता है, छोटा मोटा डिस्कशन होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि हाँ तुम कितना प्यार करते हो या तुम कैसे रखोगे लड़की को, ये है वो है। सेकंड राउंड में क्या होता है, सेकंड सेशन जिसको बोलते हैं, उसमें वो डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी है, और तुम शादी के बाद जो है कहाँ पर रहोगे, अपनी फैमिली से तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, मतलब अपने माता पिता से अलग तुम्हें सेपरेट होकर रहना पड़ेगा, या तुम नहीं रहना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं, मेरे से भी हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, क्या तुम हमारी लड़की के खर्चे अफोर्ड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैमाने जो होते हैं ना, ये सारे इस सेशंस में जाते हैं। तो सेकंड सेशन ये हो गया। और थर्ड सेशन जो होता है उसमें जो है जो लड़की के रिश्तेदार भी होते हैं वो सब भी आते हैं, और लड़की के रिश्तेदार और लड़का और लड़की की फैमिली, वो क्या होता है आपस में फिर वो डिस्कस करते हैं और कुछ बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा जो है, हम आपको अपनी लड़की दे रहे हैं, लेकिन हमारी ये कंडीशंस हैं, ये बॉन्ड हैं जो आपने साइन करने हैं कि लड़की को जो है आप इतना हिस्सा प्रॉपर्टी का दोगे और इतने महीने जो है उसे पैसे दोगे, और बच्चों की जब बच्चों की परवरिश जो है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। साथ ही साथ अगर लड़की को आपने कभी भी कुछ परेशान किया तो लड़की कभी भी आपसे इतनी ज़्यादा जो है अमाउंट मांग लेगी, और ये लड़की के ऊपर है। तो ये सब जो होता है ना, ये तीनों सेशन में होता है, और बहुत डिफिकल्ट होते हैं यार तीनों सेशन। और मेरे साथ तीनों सेशन हुए थे लेकिन मेरे साथ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था, बिकॉज ये यहाँ पर चीज़ें दूसरी थी। जो मेरी चीज़ें थी वो ज़्यादा मतलब अलग थी, बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक जो वैसी फैमिली होती है, जो ईरानियन फैमिलीज में जैसे चीज़ें चलती हैं, तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, कि भाई लड़के वाले को ना फिर से झुक के रहना पड़ेगा लड़की वाले के आगे। तो ये बहुत अच्छी बात भी है कि यार सब कुछ लड़की वाले के फेवर में है। ऐसा इंडिया में नहीं है कि इंडिया वाले जो होते हैं चोड़ में रहते हैं, अरे हम लड़के वाले हैं हम क्यों झुके हैं, ऐसा नहीं होता। ईरानियंस जो होते हैं उनमें अलग है, बिल्कुल अलग है, और ये काफ़ी हद तक मुझे अच्छा भी लगता है। सो I just explained the session process to our family. Now the next process is what, like all the sessions are done. Now what is the next process? The next process is a celebration. Like after that, we have a celebration, and I said to you that it just based on the families, it's just gonna be different in some things. But commonly, we have around about 3 celebrations. One of them is it is named as Aqd. The other thing is Hanobandan, and the last thing is wedding. Okay, we call it Arusi, and Arus means bride. So Arusi, it has to do with this word, and. So in the first celebration, that we call it like Aqd, the person come to the place in which all the guests and even the bride family, groom family, and bride and groom are present. So the person starts to
announce the groom and bride as the husband and wife. Okay, there's like the thing that even I think in every country there's something like this. After that, so we have most of the families, they have like this, even in all the celebrations, there is definitely both music and dancing. So after that, like after some time, we have Hana Banda. And Hana Banda is what? Hana Banda, oh, I have to say too, like between Aqd and the Hana Banda and wedding, there is a period of time. There must be a period of time, and this period of time is devoted to provide the groom and bride house with some furnitures and with bride and groom stuffs in their own house. So after act, when they just provide themselves with all the stuff, with all like with the house furnitures, they house their own house stuff. After that, we're gonna have Hana Banda and wedding. That newly, like recently, most of the people they're just omitting Hana Banda. What happens in Hana Banda? I really like it. In Hana Banda, Hana means mehendi in Hindi. Yes, mehendi, that kind of thing. So in this celebration, like we have some baskets of mehendi. Just get ready. They just like they will get made, and get made by the, like it is the duty of the groom family. And at that night, the groom and family they must just write something on the, like the bride must write something with mehendi on groom's palm, and so vice versa. It means that even the groom must write something via mehendi on the bride's palm. So this thing happens. They also have okay, I told you in every celebration there is both music and dancing. And but in some religious family, no, they don't. Even music and dancing, no, there won't be something like this. But I'm talking about the like the thing that which commonly happen. And we have the wedding celebration. In that wedding celebration, as most of you know, even is a country that like in which the bride must wear a white dress. Yeah. Okay, not red dress. And so yeah, even some family have this thing still, but in most of the families and most of the people, it has been omitted, because as the days just go by, the family come to this result that okay, why should we just expend this? We say what? Yeah, spend this much money, waste this much money. Okay, so they just making this whole celebration short and short, and sometimes omitting. But even we used to, like our families, our relatives used to have another celebration after the wedding, and it is named Patahti, and it is it is good hold after the wedding, like the day after wedding. And at that day, it is not night, it is day, during daylight. So the families, both the groom family, like both the groom relatives and bride relatives, just go to the bride and the groom house, and so they start dancing. They just some of them, they just bring some present for both groom and bride. So just like this. But nowadays, Patahti got omitted in most of the families, in most of the Iranian families. I'm not. Okay. So दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है. This is very much a lengthy process. I haven't expected that one. So मैं इस चीज़ को अब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. ये बहुत ज़्यादा, एक तो I can't explain about these things. But मैं क्या करूँगा कि मैं जो फ़ायज़ा ने बोला है उसके साथ कुछ वीडियोस लगाने वाला हूँ. हो सकता है आपने देख ली हो, मैंने लगा दी हूँ.
तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इरानियन मैरिज कैसा होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यहाँ पर लड़की वाला जो है वो डोमिनेंट होता है और लड़के वाले को झुक के रहना पड़ेगा। सो ज़्यादा वीडियो को हम लेंदी नहीं करते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटर कल्चर एक्सचेंज जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ जानने को मिला होगा इरानियंस के बारे में, कुछ आपकी नॉलेज गेन हुई होगी। सो Do जी, work may say something. Most of our viewers, like some of our viewers, say that because they cannot like understand me, so they sometimes say this thing that okay, would you please say the things like write the things that Faiza is saying. So is it possible for you that you put just some key points and keywords yeah, of my explanations on a okay, video for those kind of viewers I that they do that, I wanted? try to do that. सो Yeah, दोस्तों thank मैं you. कोशिश Yeah, करूँगा thank कि you. सब टाइटल्स लगाए जाएं, लेकिन समय का बड़ा अभाव है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो वीडियो हम कर रहे हैं, द वीडियो वी आर डूइंग इज़ 4:30 इन द मॉर्निंग फॉर मी। सो सुबह के 4:30 बजे ये वीडियो हो रही है, And for क्योंकि me, this बिल्कुल to समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। और क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों Look at his eyes. उम्मीद करता Mhm. हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और यू वांट टू से समथिंग टू द फैमिली फैज़ा? Just thanks, very much thanks for watching us, for being with us, and take care. हाँ दोस्तों, बहुत शुक्रिया. बहुत सारा प्यार दीजिए और प्यार की आपकी बहुत आवश्यकता है। और ओम नमो नारायण।